ट्रेलर हमने देखा, कमाल का ट्रेलर। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा कोई ट्रेलर देखा हमने। अच्छा। यहाँ पे कंटिन्यू बताइए कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों का? Well, मेरा experience बहुत अच्छा था. It was my first full-on comedy film, and I love the idea of comedy. I am so happy that I got to work with so many amazing professional people that have backgrounds in comedy. Because as everybody knows out there, when you have good surrounding people around you, they also boost you up and they also make you better. जी, और फिर हमने देखा था कि दिल्ली वैली में आप एडल्ट कॉमेडी की होगी, तो उसमें उससे कहीं ज़्यादा आप दिख रहे हैं जी। तो ये कितना अच्छा था आपके लिए और कितना मजा किया, कितना एंजॉय किया आपने? आई थिंक मेरा जो करियर है ऑलमोस्ट ऐसा है कि जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, हर साल आपको प्रमोशन मिलता है ना. तो आई स्टार्टेड विद 1 सीन इन अ फिल्म, उसके बाद 2 सीन्स थे, उसके बाद 5 सीन्स थे, उसके बाद सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, अभी ऐसे रोल्स मिल रहे. सो आई थिंक फॉर मी बहुत अच्छा था. आई लव कॉमेडी. कॉमेडी मेरी ज़िंदगी है, लेकिन इस जॉनरा का कॉमेडी कभी नहीं किया है मैंने. आई नेवर डन अ कमर्शियल मसाला फिल्म. और बहुत सालों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो परफेक्ट पैकेज आएगा मेरे पास, जिसमें स्क्रिप्ट अच्छी हो, एक्ट्रेस अच्छी हो, डायरेक्टर्स अच्छे हो. सो दिस केम टुगेदर वेरी वेरी नाइसली. And this is the very first time you're doing a double role. What was the challenging part? Well, being Layla was not. It's what everybody has seen me as. It's this, glamorous bombshell type girl, and then playing Lily, I think was easy for me because Lily's closer to my actual personality, which is quirky, which is nerdy. She's clumsy. She's all these different things that I actually have in my own personality. So it wasn't very difficult. There were days where I had to go from Lily to Layla, Layla to Lily, Lily to Layla. But I got lucky, and my producer and director kept it very organized for me, so I wouldn't be exhausted from switching back and forth. But it was a lot of fun playing both the roles, and I think out of both of the roles, it was probably more difficult playing Layla than it was Lily. Okay, Grandmasti is already there in the pipeline, and the award for Leone. Even the Grandmasti is releasing, very close to your date or might be. Grandmasti is released already. Great. अच्छा, okay. The sequel. There will be a comparison, Veer and Sunny. What do you think about it? How different will be your film from the one which is coming in the form of Grandmasti? I think no matter जो भी आप फिल्म बनाएंगे, किसी न किसी फिल्म से तो कंपैरिजन होना ही होना है. That's the nature of the industry that we work in. आई थिंक हमारा फिल्म का जो फ्लेवर है इट्स डिफरेंट बिकॉज इस फिल्म में 3-4 लोग हैं जो कभी आपको एक फिल्म में दिखेंगे नहीं. You've never seen Tushar and me in a film together. That's two very different kinds of comedy that are coming together. You've never seen Sunny in a double role before with us as well. So it's many different fan bases, many different flavors coming together in one film, and I think that creates something a little bit special. As far as compared to other films, and you always be compared. You have to compete. You have to make your own mark as a filmmaker. So I believe in our film. Sunny, what's your take? I think that 2016 is going to be the year of adult comedies. We have 3 of them coming back to back, and I think I think that our movie is definitely going to set a standard of comedy. We've worked really, really hard to make sure that the scenes that Mr. Milap has written, that they showed up in the movie, and that was very important to the makers. That was very important to PNC, and that's essentially what took so long is this I guess we'll call it a compromise between both sides to be able to keep the content that the writer wanted. वीर, आपको लगता है कि सनी के अलावा और भी कोई एक्ट्रेस जो इस तरह की कॉमेडी इतना गट्स होगा कि इस तरह की कॉमेडी कर सके? I don't think. I think what I enjoyed most about working with Sunny is Sunny ने कभी कॉमेडी किया नहीं है, but she's genuinely very funny. और जो हमारा ट्रैक है वो ऑपोजिट ईच अदर, वी गॉट टू डू लॉट्स ऑफ रियली रियली कूल कॉमेडी. एंड आई थिंक जब आप फिल्म से बाहर निकलेंगे, दैट्स व्हाट यू विल टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू सनी. अरे शी इज legitimately very very funny. I would not have done this film if any other actress was on board. Aw, thanks. So I wouldn't have. Yeah. इस तरह का माहौल था सेट पे, It's very good, यार. I mean, सब पटाया में है. That's always fun. Tushar is a very chilled out guy. सब खाना खा रहे हैं. We'd party at night. We'd go to the gym. Everybody's working very hard. And the nice thing is, जब आप इस तरह के scripts कर रहे हैं, nobody is very serious. Yeah, there is no, thinker and philosopher on set. So you're having fun in Thailand.
फिल्म में अभी जो प्रोमो था उसमें हर एक सीन में डबल मीनिंग के कुछ ना कुछ सीन्स हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है इस पूरे प्रोमो में? इस पूरे प्रोमो में आई थिंक द हॉर्स सीन, आई लाइक द हॉर्स सीन, क्योंकि घोड़े का बहुत बड़ा रोल है फिल्म में और बहुत स्वीट ट्रैक है घोड़े का आसरानी जी के साथ। वो आसरानी जी के घोड़े हैं। It's a very innocent, Innocent, might हाँ. not look like it हाँ. in the trailer, but it is a very But हाँ, Sunny, your favorite scene of the promo? In the promo, I mean, it's just me in a bikini through the whole promo, so I don't know. But I can tell you what my favorite scene in the movie is. My favorite scene in the movie is when Layla realizes that she can use, the things that she's used in the past. She can't go by what she's counted on all of her life to get the love of her life. She has to go a different route, and that's when she creates. There's this scene where she has this Tushar bobblehead Murti, and she's doing a puja, and we recreated the baby doll song for this particular scene. That's my favorite. सनी रियल लाइफ में आप लैला को फॉलो करती हैं लेने को ज़्यादा? I think that Layla is what everybody sees me as out in the world. They see me as this person. And Lily is actually closest to my own personality. So I personally like Lily more. I think Veer like Lily more too. So I think when people watch this movie, they're going to see a side of me that they've never seen. So they get both sides of the coin, I guess you could say. So both sides of the sikka. Okay, Sunny is already in demand here. Absolutely. She's a hot star here Yes. in India itself. Yeah. Are you apprehensive the moment you came to know Sunny is a part of it? With all due respect. That's the reason I did the film, to be honest, is because I like being opposite a strong actor with a presence as well. So that way I don't think about these things. I'm a pretty secure guy in my fan base and my talent. But to be opposite a huge star is obviously a cool thing. Not huge. Stop. You are the one who will pull the crowd in, the script is mind blowing. Even the promo is very promising. Do you agree with this? And apart from this, the USP, you're cutting in a two role, in a double role. Well, that's the one thing that is different in this movie for me is that I get to play two characters. But I never believe in the one person brings in everybody to the movie theater. I think when people are going to watch this, they're going to see the three of us together. And they're going to love those characters, but also our supporting cast is unbelievable. They are so funny. They are so strong in their characters and who they are. I think that once the trailer comes out, people are going to start loving some of these characters. But that first day, when they go watch the movie and they see the supporting cast, they see Tushar, they see Veer, they see everybody in it. It's not a one-man show. It never is. It's always about the entire cast. Okay, your journey from Jism to Mastizaade, don't you think you'll get typecast when you talk about any other way you're connected with the sex comedy or all about the hotness, Don't you think you should change that track and do some other films? There are a couple of films that are going to be very different from this, but I actually don't care if I get typecast. It's going to happen, it's going to happen. Main kya karu? It's not my choice. I'm not typecasting myself. Everybody's typecasting me. So, agar hona to hoga. So, what am I to do? Given a choice, किस तरह की film करना चाहेंगे? I love comedies. I always love comedies. I think that being on the set of a comedy film is probably the most fun because you can just be funny, you can be silly, you can be crazy. I'm not, too serious of a person when I'm on set. So those are the type of people that I love being around, where you can be creative, but also know that you don't have to hold back. You can just be silly and crazy. The crazier you are, the better it looks on film. Okay, किसी बड़े एक्टर के साथ काम करने का सपना ड्रीम? Yeah, this is like the stamp question in every interview. Of course, I would love to work with bigger stars. That's, I think, every actor or actress's dream in life. But I want to work with people that want to work with me. And I want people that are like Veer and Tushar and most of the people that are in this movie that are secure with themselves and that have no issues with, no hang-ups or no issues with somebody's popularity or somebody's not. Anybody who's popular in a film, we all work so hard that each of our fan bases will come together and watch it. Okay, there's so many things happening in the current scenario. People start objecting, start, doing
that for any scene or any particular dialogue? Are you nervous about that? You know, No, I don't think you can say, though it is adult comedy, though it is mentioned, it is for how it is. I think it would be the most sanskari thing also, and somebody would find something to object. I don't think you can worry about those things. You know, we live in an atmosphere where somebody will object to badly cooked bhindi, somebody will object to an adult comedy, somebody will object to a sanskari film also. You just kind of have to believe in your content, वो आप करिए. बाकी सब जो होगा होगा. आपको इस सड़क पे गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाते जाइए. You can't predict any of that. Okay, so what message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of Mastizaade? बहुत, I mean, हमने इतना मजा किया है फिल्म बनाते वक्त. I'm pretty sure that has turned up on screen. 2 Sunny Leones for the price of 1. I think it's a great script. It's fun, and it's this very big, large comedy film that you should come and see. You invite grand Masti star cast for the special screening of Mastizaade. I'm sure they'll come. Like everybody. Yeah, everybody will come and see Doesn't matter it. what movie they're making, where they're from, what background they are. We Yeah. want everybody to come watch them. And also, जब हमने teaser निकाला फिल्म का, we received a lot of support from the entire industry. You know, from everybody, big stars, small stars, etc. So I hope they'll come and support the film as well. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Huh? अच्छा, you go. Hey everybody, you want to do it together? I'm Come. Sunny Veer. Okay. Hey everyone, I'm Sunny, I'm Veer, and we want to wish everybody Happy New Year and Merry Christmas before that. and Happy Holidays. What else? That's it, right? बाकी सब अगले साल. Bye. चलो. वेल 29 जनवरी को मस्तीज़ादे आ रही है और जैसे यूट्यूब और हर जगह जो प्रोमो है, ट्रेलर्स है, द सॉन्ग्स, लोग आई थिंक दीवाने हो गए हैं, सिक्के हिल रहे हैं, सिक्के उछल रहे हैं और धमाल हो रहा है, बहुत कॉमेडी मस्ती हो रही है. तो टचवुड 29 जनवरी को जब ऑडियंस थिएटर में आएंगी तो उनको बहुत सारी मस्ती मिलेगी और जो फिल्म में है, जो प्रोमो में है, जो ट्रेलर में है, वो सारी चीज़ें फिल्म के अंदर है. हम उनमें से नहीं कि वी नॉट शो समथिंग ऑन यूट्यूब ऑनलाइन एंड पता चला फिल्म में कुछ मसाला नहीं बचा और हम उल्लू बना रहे हैं. हम उल्लू नहीं बनाएंगे, हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे और हम शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे. सर कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि सेम जॉनर की मूवी पहले रिलीज हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये मूवी को कम जनता मिलेगी, कुछ ऐसे? वेल दोनों फिल्में मैंने लिखी है मुश्ताक के साथ और टचवुड दोनों फिल्में चलेंगी, दोनों फिल्में गर्म है, दोनों फिल्मों का बज़ है और दोनों फिल्में आ रही है. टचवुड जैसे सनी में कहा, सनी सर दिस ईयर समर हैज कम इन द मंथ ऑफ जनवरी, समर हैज कम अर्ली, इट्स गोइंग टू बी द हॉटेस्ट मंथ ऑफ 2016. दोनों फिल्में चलेंगी. तो सनी, हाउ वाज इट प्लेइंग अ डबल रोल? Playing a double role was a lot of fun. मैंने कभी किया नहीं, so it was fun to be able to play 2 characters. एक character जो है लैला, जो सबने देखा है. You've seen me in this avatar, so it's not something new, but Lily is new, and Lily लैला का बिल्कुल opposite है. And Lily is clumsy, she's more conservative, she's dorky, she's nerdy, she stutters, she has so many different qualities उसमें है that is the complete opposite of Layla. So जब लोग देखेंगे they will get the best of both worlds. Layla भी मिलेगी and Lily भी मिलेगी. तो कौन सा कैरेक्टर आपको रिलेट करता है? I know ये थोड़ा सा difficult is hard to believe. I don't know how to say that in Hindi, but it was more difficult to be Layla क्योंकि जब मैं लिली बनती थी, मैं ग्लासेस पहनती थी, मैं गिरती थी या I was stuttering, funny faces बनाती थी. So मेरा कोई concern नहीं था कि मैं बिकिनी पहन रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, like is everything okay, and you have to act a certain way. So
जब लिली का पैकअप होता था, मिलप सर एंड रंगता would be, they would always come to me say, सनी लिली का पैकअप हो गया, हमको लैला चाहिए, प्लीज बिकम लैला अगेन. नहीं, ये लिली हमेशा लिली थी. ये मतलब जब लिली का सीन होता था एकदम इनके चेहरे, शी वाज हैप्पी, शी वाज ग्लोइंग, शी वाज ये लाइक शूटिंग करते. और जैसे लैला आती थी शी वाज मुझे लिली चाहिए, मुझे लिली चाहिए, मुझे लिली चाहिए. Yeah, so I related more to Lily. Both characters were a lot of fun to play in their own ways, but Lily's somebody that I think जब लोग देखेंगे enjoy करेंगे. And who was more fun on the set? Neil, Tushar or Milap? हमारे मिलाप. ये एकदम और ये जाती हो रही है. मिलाप सबसे नॉटी है, मिलाप गंदा बच्चा है. हाँ, मैं बोलती थी that मिलाप हमारा गंदा बच्चा है. Just because he was naughty on set, इतना मस्ती करता था that he would make all of us laugh, and especially जब आप ऐसा movie shoot करते where you have double meanings or you have certain scenes जो certain लोग के लिए शायद uncomfortable हो सकता था. And you have scenes like this where Milap is ready to wash the car, bikini पहन के wash, he wants, show you how to do it. Or scenes, जो भी scenes होते थे, he would get right in and say, okay, this is how I want it. So अगर वो लैला का character play कर सकता था, लिली का character play कर सकता था, तुषार या वीर का character, and he could get in there and show exactly what I wanted. वो जो confidence है, it also makes actors feel confident, and it also makes them feel secure that हाँ, हम अगर हमारे डायरेक्टर कर सकते सबके सामने ऐसे, then हम क्यों नहीं कर सकते. So he made us feel very comfortable. रितेश के बारे में जानना चाहते कि कैसे रहा, और प्रोमो में ही दिख रहे वो खाली, इंटरव्यूज में भी नहीं दिख रहे, तो कुछ बताना चाहेंगे. रितेश मेरे बहुत पुराने, बहुत करीबी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे. और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस फिल्म में कैमियो किया है, एक गाना किया है, कुछ सीन्स किए हैं, और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. रिसेंटली ट्वीट आया था रितेश का, तो वाज इट अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी की मतलब सच में ऐसे कुछ इशू हुए थे आपके? वेल, मैं वापस एक ही बात करना चाहूँगा कि रितेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, और मैं ऑनेस्टली बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मेरी इस फिल्म में काम किया और ये कैमियो किया. I know, मुझे पता नहीं ये न्यूज़ कहाँ से आता है. ये न्यूज़ इतना ट्रैवल कर रहा है, सब जगह में इंडिया में यही न्यूज़ आता है. Do I want it? It was misinterpreted. The question was is do I want to? हाँ, मैं सोचती हूँ, करना चाहती हूँ, अब भी करना चाहती हूँ. नहीं. Am I pregnant now? नहीं. Am I having a baby in a month? No. So I don't know what the world's gonna bring. मुझे पता नहीं है. अगर मैं चाहती हूँ then yeah, of course. I think that a lot of women out there, अगर वो entertainment में होते या दूसरे जॉब में होते या सिर्फ दुनिया में होते, that they want to become a mother, and so it's true, but अभी नहीं. सर, आपके मुंह के डायलॉग काफी हिट हो रहे, कोई एक डायलॉग जो अभी आपको याद है? सिक्का हिला तो पास. हाँ, मुझे पता है मीनिंग क्या है. ग्रेविटी है मीनिंग. वीर ने बोला था कि एक्चुअली हमने फिल्म को अपसाइड डाउन शूट किया, उल्टा शूट किया. तो तुषार एक्चुअली छत पे लेटे हुए थे, उनको छत पे हमने बांध दिया था, और छत पे किसी को बांध के सिक्का रखोगे तो ग्रेविटी की वजह से सिक्का नीचे गिरेगा. फिर वो सिक्का नीचे गिरा, हमने फिर सीन उल्टा सीधा कर दिया और आपको लगा कि सिक्का हिल गया. I mean, अगर चांस मिलता है then of course, who wouldn't? I mean, it's a question that gets asked all the time. Of course I want to, but I want to work with actors that want to work with me, and it's just as simple as that. Milap, it's your favorite, the first film आपकी. Why adult comedy you would have done drama? आप जो बहुत अच्छे से करते हैं वैसे फिल्म में ऐसी क्यों नहीं सोचा आपने? Why you came up with such concept of film? वेल, एज अ राइटर मैंने मेरा करियर जो है 2 हिस्सों में हमेशा बताया, संजय गुप्ता सर और कॉमेडीज. मैंने संजय सर के साथ कांटे, शूटर ने बनाला ऐसी फिल्में की है. एज अ राइटर आई हैव डन लॉट ऑफ कॉमेडीज, हाउसफुल, हे बेबी, मस्ती, ग्रैंड मस्ती.
बट एज आई ऑल्सो ट्राइड एक विलन जो कुछ अलग हो. लेकिन जब ग्रैंड मस्ती चली तो मतलब दुनिया ने ऐसे बिहेव किया कि मतलब मैंने फिल्म बनाई थी बट इंदू जी ने माइंड ब्लोइंग फिल्म बनाई थी. लेकिन उसका थोड़ा फायदा मुझे हुआ कि पीएनसी मेरे पास आई और कहा कि ये फिल्म इतनी सुपर हुई है ग्रैंड मस्ती, एक ही फिल्म में पूरी हिस्ट्री में इंडिया में जिसने ए सर्टिफिकेट के साथ 100 करोड़ का धंधा किया. तो पीएनसी मेरे पास आई, कहा कि ऐसी फिल्म बनाते हैं और अगर आप औरों के लिए लिख सकते हो ऐसी फिल्में तो खुद के लिए क्यों नहीं बना सकते. तो आई थॉट उनका लॉजिक काफ़ी स्ट्रांग था. और तब मुश्ताक के साथ बैठ के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते कि सिक्के हिले और नोट बरसे और फिल्म चले. अच्छा, 29 को आपकी फिल्म के साथ सारा खड़ूस भी आ गया राजकुमार हिरानी की. तो डू यू थिंक ये जो क्लैशेस होते हैं, अभी रिसेंटली भी हमने देखा दिलवाले बाजीराव का क्लैश वाला, कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं, कुछ फिल्में चलती हैं जिस तरह से, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट एज अ फिल्म? मैं पहले कहना चाहता हूँ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर इन द होल कंट्री इज राजकुमार हिरानी सर. आई एम अ क्रेजी फैन ऑफ हिस. आई लव माधवन एज एन एक्टर. साला खड़ूस इज लुकिंग वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग एंड टचवुड आई एम श्योर दोनों फिल्में चलेंगी. दिलवाले भी चली, बाजीराव भी चली, टचवुड मस्तीजादे भी चलेगी, साला खड़ूस भी चलेगी. दोनों फिल्मों का ऑडियंस अलग है. उनको उनकी ऑडियंस बहुत प्यार करेगी, हमारी ऑडियंस हमको बहुत प्यार करेगी. राइट सनी? Yeah, of course. And मैं चाहती हूँ that when you go to the movie theaters, you watch one movie, then you come watch ours, or you watch ours first and then you go watch theirs. अच्छा, इसके बाद दोनों की जोड़ी की रिवर्स नजर आने वाली है, any plans to work on a specific project? I hope so. I would love to work Me with her. too. Like absolutely. और टचवुड अगर ये फिल्म टचवुड चली एंड हमने होपफुली अगर सीक्वल बनाया तो इनके लैला लेले और लिली लेले के बगैर मतलब मस्तीजादी के बिना मस्तीजादी तो नहीं बन सकती. तो अगर वापस मस्तीजादी बनी तो सनी के साथ बनेगी. और अगर कुछ और अच्छा कुछ स्क्रिप्ट आया, मौका मिला हमको साथ काम करने का तो 100% करेंगे. सिर्फ इतना कि जो हम इस फिल्म के साथ वी हैव डन, वी हैव टू लिव अप टू दैट, the same. मत बोलो, मुझे फिर से नहीं करना है. अच्छा ठीक है. Just kidding. अब सनी लियोनी फिर से बिलाल के साथ काम नहीं करना चाहती है. ये ब्रेकिंग न्यूज़. I think इस फिल्म में जितना टाइम हमने स्पेंड किया with Rangita, yourself, and even the boys, I believe I made a friend for life. And इस इंडस्ट्री में difficult है friends ऐसे ढूंढने के लिए या आपके लाइफ में आते या नहीं. एंड वी हैड सो मच फन दैट अगर हम काम करते या नहीं करते, मुझे पता है दैट हम हमेशा के लिए फ्रेंड्स होंगे. ओके सर, वहाँ पे रिसेंटली एक बस आया था, आप करण जौहर की अगली मूवी में ऐसे कैमरा आ गया, हाउ टू इज इट? It's not true. I'm sorry. It's not. Thank you. Thank you. So please welcome Sunny Leone. I'm sure you're all very excited to see her. Okay, the philosophy of Lawman page 3 is with the tagline, "Be the star." That is, stardom is not restricted to a certain breed. It's not about being a celebrity either. Stardom is a state of mind. It's believing that fame and fortune is always within your reach. And Lawman page 3 inspires men and women to seek the stardom, spotlight, and face it confidently. It lets them be the star. Incidentally, it matches perfectly with the star we have with us here. So once again, can we have a huge round of applause for her, please? Sunny Leone. And let me now take this opportunity to invite on stage Mr. Yash Jain and Mr. Hiten Jain, the directors of KKCL, with Mr. Hashmukh Rathod, the brand head of Lawman page 3, to felicitate Sunny Leone and Mr. Milap Zaveri.
So how are you feeling associated with Lawman? First of all, thank you, Lawman, for giving Mastizaade itna support. It's always nice when we have a brand that full-heartedly and open-heartedly gives so much support throughout the movie and throughout our shooting. For all the women out there, even I wore a pair of Lawman jeans, although I cut them to make shorts. So if you want those perfect boyfriend jeans, just go into your boyfriend's closet or your husband's closet and grab your boyfriend jeans made by Lawman. But these boys, these boys looked absolutely amazing, wearing the Lawman brand, and thank you again for having us. Thank you so much. Thank you. Okay, Sunny, I know that it's very bad of me to do this, but you'll have to get up and shake a leg a little bit on the song, along with Milap. Come on, Milap. Yes, you have to do that. Little bit. See, it's not fair to ask you to dance. It's a male song. It's not a female song. A male is So singing. you are the male, right? If I dance, the stage will break. So then we'll be like, one floor on the ground floor down. We'll try. We'll try a little bit. One step. One. And we'll do it at the end. Before we leave, we'll do it, okay? We'll have a full-on party before we leave. Yeah, before we leave, yeah? Cool. Okay, now before we open up to the media, I would like to call the contest winners of Facebook on stage. We had this little contest on Facebook. Whoever answers a very simple question gets a chance to meet Sunny Leone. So we have the winners with us, right? Where are the winners? You are the winners. Oh, please come on stage. How did it feel to shoot for the brand while you were shooting the song? I'm not in this song. It's the boys' song, just like we mentioned earlier. This song was created just for the boys because all guys out there and most men want to be a lawman. So, so the boys were in this, and a lot of other girls were in this. If you haven't seen this song. Last question to you. I know you have a double role in the movie, right? So wow, I mean, you can't handle one Sunny Leone and there are two in the movie. So that's one of the reasons why people will go rush to see the movie. Any other reason why do you think the movie is going to be a big hit? Which I know it will be. There's a lot of masti in the film. All the audiences who've loved Grand Masti will love Mastizaade because it's got way more masti than that film, and whatever we've seen in the promos and the songs, it's all in the film. We're not going to cheat audiences by showing something online and something else in the movie. सब कुछ picture के अंदर है. Jan 29th, that's this Friday. सिक्का हिलेगा and शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. Thank you so much, Milap. Now I would request Mr. Vikas Jain and his wife to please join me on stage.
प्रसून जोशी ने ऐसा बताया कि मैं आपके पास्ट लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, मैं उसे क्रिटिसाइज करना चाहूँगा. व्हाट डू यू से अबाउट? किसने बोला था? प्रसून जोशी, इट्स अ पॉपुलर राइटर. ओके, मुझे पता नहीं है वो कौन है. I'll go Google him and then उसके बाद मैं कमेंट करती हूँ, ठीक है? थैंक यू. हेलो, मेरा सवाल आपसे है कि फेमस डायलॉग है कि मस्ती ज़्यादा संभल के आ रही है लैला. सो विल यू प्लीज से दैट डायलॉग फॉर. I think 1.5 years हो गए मैं वो I think डायलॉग उससे और बड़ा हिट डायलॉग है फिल्म में. सनी वो बोल के बताएंगे. सिक्का हिला तो पास. थैंक यू सो मच. मस्तीज़ादे के साथ साला खोड़िस भी रिलीज हो रही है, तो आपको क्या लगता है इसका मस्तीज़ादे के बॉक्स ऑफिस पे कुछ कलेक्शन के लिए क्या होगा? आई विश साला खड़ूस बेस्ट ऑफ लक. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ राजकुमार हिरानी सर का, माधवन ऑल्सो. एंड आई थिंक टचवुड दोनों फिल्में अच्छा बिजनेस करेंगी. दोनों अलग ऑडियंसेस के लिए है. एक सीरियस फिल्म है, एक फिल्म में मस्ती है, डबल रोल सनी लियोन है. तो ऑडियंस दोनों देखेंगी, दोनों का मजा. आई थिंक हर फिल्म चलनी चाहिए, सबकी फिल्में चलनी चाहिए और ऑडियंसेस को सबको प्यार देना चाहिए. Till date, you have done all the sensual roles as such. Don't you find capable enough to do some hard-hitting, some memorable roles, or win a national award in the future as such? Any aspiration for that? मस्तीज़ादा मेरे लिए एक मेमोरेबल रोल है सर, क्योंकि बहुत मस्ती किया, बहुत फन किया. इसके बाद there'll be 2 movies that'll get released that are more in a serious zone. So देखेंगे अगर लोग मुझे ऐसे दिखने में अच्छा लगता है या दूसरे. But don't you want to change your image as such? I mean, can you do some different role? This is a question that gets asked a lot by the media. सिर्फ मीडिया मुझे चेंज करना चाहते हैं, मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ. मैं जो हूँ मैं हूँ. Naturally you have different chapters in your life. दूसरा chapter भी start होता है and you move forward and you only hope to move up in life. And with that things will change. हर movie के बाद सब कुछ change होता है. So we'll see whether people like seeing me in a certain role or they like seeing me in a different role. Thanks, Anand. Okay, the question for you is, we had used the Leone deos during the shoot. So did you feel that energy, instant energy with those deos? Well, I used the Leone deos. They were so amazing कि 3-4 दिन नहाने की जरूरत नहीं पड़ी. इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी. तो Sunny is grateful she wasn't there in the shoot now. yeah, Sunny right? is grateful. Actually, you didn't smell it all, so that's good. हमने सुना है कि फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं या ऐसे कुछ सीन है जो आपको पसंद नहीं आए थे करने के लिए, जो कंफर्टेबल लेवल के आपके नहीं था. Right. हर मूवी में, हर स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं that you either don't like या uncomfortable feeling होता है या आप कर पा नहीं सकते. So every single film, every single script that you read, that you're a part of, these changes happen. It's a very natural thing. And there were a couple of things that I said, Milap, मुझे ये करना नहीं है. But the most amazing thing about working with PNC, Rangita, who's a female producer, and also with Milap, is that they're amazing people. ऐसा कुछ नहीं किया that they would want me to feel uncomfortable. So we would talk about scene कैसे change कर सकते, that writer, director Milap would get what he wanted, but at the same time मेरा comfort zone जो है, which is, as most people know, a little bit above other people, how we can make those things work. Compromise होता है. मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि सनी मेरी फ्रेंड भी है और मेरी हीरोइन भी है, एंड शी इज़ अनबिलीवेबल. और वी डिड आवर बेस्ट टू मेक हर कंफर्टेबल, सो मच सो कि इस फिल्म का जो सबसे आइकॉनिक सीन है जब सिक्का हिलता है वो इनका सजेशन था. तो इनको इतना भरोसा था मुझ पे और इतनी कंफर्टेबल थी कि इन्होंने इतने अच्छे आइडिया दिए इस फिल्म में. जैसे कि फिल्म का नाम है मस्तीज़ादे, तो ऐसे कुछ स्पेशल ऐसे कुछ हुआ जो ज़्यादा मस्तीखोर कौन रहा, मतलब एज कम्पेयर टू तुषार जी या और? सबसे बड़ा मस्तीज़ादे हमारे डायरेक्टर है. सबसे ज़्यादा. इफ़ यू वॉच एनी ऑफ द बिहाइंड द सीन्स और मिलाप के इंटरव्यूज जो है, आई थिंक यू गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ कितने मस्ती मिलाप करते हैं सेट पे या इंटरव्यूज में या ऐसे जस्ट हैंगिंग आउट.
So he was our biggest Mastizaade. क्या आपने पूछा सबसे बड़ा, तो उन्होंने मेरा साइज देख के जवाब दिया है. Size का नहीं था, size का नहीं, your mind. There was a buzz that because of the sexual content, this movie was delayed for 6 months. So what do you want to say about it? All I'll say is, you've seen Grand Masti. Grand Masti, whatever was there, this is 5 times more, and it's in the film. It's in the film. It's past, and I promise you, when you go to theaters, it is the bap of Masti, and you will get more dhamal and masala than any adult comedy in history till today. Cool. That answers your question perfectly. Right? Thank you so much, media. And before we move on, I would like you to sign these T-shirts for us. And अच्छा, while Sunny signs, पूरी मीडिया को मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, मेरी तरफ से ये मैं दे रहा हूँ, एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. सबको लाइफ में यू नीड स्ट्रेंथ, यू नीड ताकत, एंड यू नीड, अगर आप ताकत हो और आप मतलब हंसते खेलते तंदुरुस्त थिएटर में आके पिक्चर देखे, इसलिए रहमत मैं आप सबको केला देना चाहूँगा. ये मस्तीज़ादे का केला है, बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही तंदुरुस्त है, और बहुत ही केला कड़क है. और ये केला जो है, केले के साथ अकेले मत आना थिएटर, सबको अपने दोस्तों को लेके आना. तो ये कोई है जो बांट सकता है सबके बीच में? आप लोग आप बांटोगे, आइए ले. Favorite fruit है banana. हाँ, ये केला है, ये ले लीजिए. आप सबके लिए मैं केला लाया हूँ, और थिएटर में अकेले मत आना, बहुत सारे केलों को लेके आना. थैंक यू. Milap and Sunny, would you please cut this cake for us? सर, इतने केले खाए कि खुद अब केला बन गया हूँ. तरबूज बन गया हूँ, तरबूज.
आपने बहुत अलग अलग तरीके के प्रमोशन किए, बट ये एक अलग ही प्रमोशन, तो हाउ यू आर फीलिंग टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट? I think out of all the events जो हमने किया, ये मेरे लिए सबसे special है, क्योंकि if we can help out either these 3 young ladies, 4, you know, there's 4 kids here today, or even anybody else, you know, that I think that means the most in life. Life में life होता है, and बुरी चीज़ें होते हैं या अच्छी चीज़ें होते हैं, but when you can do something nice, वो सबसे अच्छी चीज़ होता है ना. आई थिंक जो लोग फिल्में बनाते हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, और जब एक फिल्म निकलती है तो बहुत नर्वसनेस होती है, और अगर आप यूनिवर्स में कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं फिल्म से पहले, इट्स अ गुड वे टू गिव बैक बिकॉज वी बीन लकी टू बी एम्प्लॉयड इन टू वर्क. आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर ब्लेसिंग देन टू मेक चिल्ड्रन. Before you do anything in life, if you make children smile, that's the best blessing you can look for on anything. जी सनी, प्रमोशन स्टार्ट है, आगे और क्या क्या प्लान है मूवी को प्रमोट करने के लिए, जैसे आज अपने एक अलग ही इवेंट में हम देखे जा रहे हैं आपको? Well, this was, I don't think something that was in the plans. Miss Ritu ji here, she asked us if you know, we could be a part of this, contacted my designer Hitesh Kapopra, who also designed this, did all the designing for this movie, and he said this is what's going on, do you want to be a part of it? And without hesitation, it's a yes always, and this is probably the best thing I've done today, and I don't want to do this, I actually just want to play. As much as I love talking to everybody, the smiles on these 3 little girls is the most amazing thing. सुनी, और जैसे कि हमने कुछ दिन पहले माधवन से सवाल किया था कि एक जैसे आप किसी से काम, कोई पार्टनर चाहो फिल्म में काम करने, तो उन्होंने कहा था सनी, तो क्या आपका भी वैसे ही है कि आपको उनके साथ कुछ काम करने में इंटरेस्ट? अगर चांस मिलता है, if it's written in my lucky stars, अगर ऐसे बैकग्राउंड सीन पे भी होती I would say yes, even if it was for 1 second. थैंक यू सो मच. व्योम के साथ क्या आप लोगों का एसोसिएशन के साथ व्योम इस कलेक्शन के साथ? जी, आई मीन वी गॉट कॉन्टैक्टेड बाय सनीज डिज़ाइनर, इसलिए हम यहाँ पर है. फॉर अस इट्स मोर अबाउट बीइंग हियर फॉर अ वेरी वेरी गुड कॉज, और इनको मुस्कुराते हुए देखने के लिए हम यहाँ हैं. आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. सेल्फी का सर कैसे ख्याल सर बच्चों के साथ जितनी भी तस्वीरें लो वो कम है, कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो मतलब 1 सेकंड में इंसान अपनी मुश्किलें भूल जाता है, और ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, और सेल्फी इनके साथ लेने मतलब हमारे लिए नॉर्मली इन स्टार्स के साथ लोग सेल्फी लेने आते हैं. इन आई थिंक हम सबकी कुछ नसीब है कि हम इन बच्चों के साथ सेल्फी ले रहे, फोटो ले रहे. आई थिंक हर रोज इतने लोग सेल्फीज लेते हैं, अगर किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं एक सेल्फी लेकर, देन वी शुड बी देयर फॉर श्योर. आपका एक प्रोमो आउट हुआ है बेबी डॉल संस्कारी, कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? वो मेरा फेवरेट सीन है एक्चुअली, सो आई होप दैट एवरीबडी इज लविंग दैट, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीन है मूवी में. बट उसमें हम क्या डिफरेंट देखेंगे? जैसे बेबी डॉल तो हम देख चुके हैं, बट ये संस्कारी वाली बेबी डॉल है, कितना डिफरेंस है इसका? आई थिंक people will be surprised, क्योंकि इस मूवी में I get to do many things. I mean, promos में, songs में, ऐसा दिख रहा है that there's only one type of comedy, or there's, you know, people are only seeing me in one way. But I do believe that जब लोग ये movie देखेंगे, they'll get to see different sides of what I can do. And I believe that this is about retweeting photos, and the amount of retweets we get. Retweets and the likes on Instagram okay. and on FB. Okay. And on Facebook. Over what period of time? Till the 4th of Feb, because that's a Cancer Awareness Day. So if you're watching this, अगर आपने ये फोटो Instagram पे देखा है, अगर आपने ये फोटो Twitter पे देखा है, please RT these photos, please like these photos on Instagram, because they were for a very very good cause. You're doing a good thing. Please do so. And I would like to say that on behalf of Daniel and I, whatever that number is, we will definitely be matching it. We're matching it. We're matching. Thank you.